Padum is still 35 kilometers away, and we are still struggling on bad patches of road. ऐसा मारना okay, again we have reached another steep section, and that too sandy one. आराम से फंस गया. There are a lot of, what do you call it, oh, I hit my bash plate. कहीं तो लगी भाई. तुम्हारी भी लगी. मेरी भी लगी. तुम छोड़ो, मेरी भी लगी. अरे कोई नहीं, वही ठीक है. बचना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट. जीरो ठीक है. ये रेत कहाँ से उठा के लेके आते हैं. मैं कल ना ढंग से बांधूंगा, जिससे कि ना कल सामान ऐसे बांधूंगा सामान आगे तरफ ना हो. मैं खड़ा होता ना तो सामान आगे आ जाता है, फिर वापस बैठने में दिक्कत आती है. हाँ और चढ़ाई है भाई. हमारा क्रिस्टोफर तो फिर से आगे निकल गया. और चढ़ाइए, बहुत आगे और चढ़ाइए. चलो आगे ना देखो, सामने का रोड देखो. मुझे नहीं पता खराब कौन से, सब खराब ही लगे. हाँ अच्छा ठीक है. Alright, this is the road condition. It's still good, somewhat. I have seen there are worse sections as well.
आगे रेत वाला सेक्शन है. I can see a steep sandy section again, so need to be बहुत ऊपर नीचे है. लंबा नहीं okay, another pin down. क्या पिन होता है? कौन सा पिन टर्न बोलते हैं? Another hairpin bends. We have done so many hairpins bend today. That too hairpin with unpaved roads. Hairpin on paved roads is difficult. Now do that in rocky and dusty condition. So I am connected to Vikas using the Bluetooth, so I'm talking to him. Okay, another droppy section. Okay, now this is going to be difficult. Sala, मैं panic हो गया. I got panicked. All right, that was another difficult section of the road. So imagine that, and you've done that many times over on longer stretches.
फर्स्ट गियर में खींच डाला. Okay, that was a bridge crossing. हाँ we are expecting to get some paved sections soon. Let's see. The roads are never ending. It was like hardly 150 kilometers, they said. But it seems like more than 150, and it took us so many hours. I think we left at 9:30, so it's more than 6 hours of riding. That's beautiful Zanskar river, if I'm not wrong. First year, but I'm not second. नहीं, अच्छा किया हमने. पता है कल अगर हम निकलते ना, हमें गोम्बू रंजन में ही काम करना पड़ता, और वहाँ पे तो हाइट है. तो अभी हम जिस्पा में रुके तो हमारा थोड़ा बहुत एक्लेमेटाइजेशन हो गया है, मतलब कि हम थोड़ा 10,000 फीट के ऊपर हो गए, तो उसकी वजह से थोड़ा हाँ हाँ हाँ. पिछले साल तो ये लोग आए थे ना, ये लोग आए थे पीछे से रात को, सबसे पहला वो जिस्पा वाला होटल में घुस गए थे. हाँ हाँ नहीं कर नहीं पाते हैं. नहीं, हमने बहुत डिले किया था कल. वो तो था वैसे कुल्लू से, हमने वैसे कुल्लू से आगे निकलना था मनाली, तब जाके कुछ हो पाता. लेकिन हम कुल्लू में रुके फिर, और फिर उसके बाद बहुत रुके भी. फर्स्ट डे में नहीं पाया कर लूँ, क्योंकि हमें क्रॉस करने देते नहीं टनल रात को. तो ऐसे ही चल रहा है. अरे बाप रे, बाइक. अरे अच्छा हो बाइक ऊपर, थोड़ा ऊपर आ गया, वरना पीछे होता ना, पीछे रुक गया था, तो मैं पीछे ही जाना था मेरे को. बाइक ने साथ दे दिया, वो चढ़ाई में रुकी नहीं अभी तक. तो अभी जो रुकी तो वो अलग चीज है, लेकिन जो प्रॉपर ऊपर चढ़ाई थी, वरना तो मेरी भाग रुकती है बीच में, स्टॉल होती है ज्यादा.
जैसे लग रहा है हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, वो सब निकल जाए. वो तो है. Okay, then again there's a stoppage now. There's a blasting going on, so the roads are closed. You can see a huge traffic pile up there. So there'll be traffic on both the sides. People coming towards this side, now going that side. But am I even visible? Okay guys, it's very dark, very dark. It's 7 p.m. now. We are stuck at about 25 kilometers from Padum, all because of what is it called? The road is closed because they're blasting the hill. So yeah, we're stuck here. It's cold, it's dark, but there is moon shining out there. Yeah, so there is Christopher, who's on top duty, and Vikas, who's recording this thing on his GoPro. I'm the cameraman. Yeah. It's fun, but alright guys.